নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইন্সৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই মৌসুমী শৰ্মা বৰুৱা প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটীৰ খাউকুছিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মাটি দখল কৰিবলৈ অহা দালালক গ্ৰেপ্তাৰ আব্দুল ৰহমত নামৰ এজন মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ দালালক উত্তম মধ্যম সোধালে উত্তেজিত ৰাইজে দুদিন পূৰ্বে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল আব্দুল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত হাটগাঁও আৰক্ষীয়ে দালালটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পুনৰবাৰ জনাইছো গুৱাহাটীৰ খাউকুছিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মাটি দখল কৰিবলৈ অহা দালালক গ্ৰেপ্তাৰ আব্দুল ৰহমত নামৰ এজন মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ দালালক উত্তম মধ্যম সোধালে উত্তেজিত ৰাইজে দুদিন পূৰ্বে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল আব্দুল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত হাটগাঁও আৰক্ষীয়ে দালালটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই মাটিখিনি আমাৰ নামত আছে মোৰ দেউতাই ক্ৰয় কৰা মাটি আজি অত বছৰে মিয়াই দখল কৰি আছে আমি চেষ্টা কৰো পুলিচক আমি বাৰে বাৰে আহ্বান জনাও কোৰ্টত কেছ দিছো কিন্তু একোতে আমি সফল হ'ব নোৱাৰো আজি শেষত আমি পুলিচ প্ৰশাসন আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সহযোগত আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছো এইবোৰ আপোনালোকে দেখিছে গোটেই মিয়াই দখল কৰি আছে এইখিনি মাটি আব্দুল ৰহমত নামৰ এটা মিয়া আছে এটা দালাল হি মাটিৰ দালাল হি অলপ দিন আগত অসম চৰকাৰে যিটো মাটিৰ দালাল এগালমান এৰেষ্ট কৰিছে তাত হি এৰেষ্ট হৈছে হি তাৰ পৰা ওলাই আহি জেলত থাকি আহিছে জেলৰ পৰা ওলাই আহি লগালগ ইয়াত কংক্ৰিটৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছে আজিৰ যুগত মণ্ডল নিশ্চয় জড়িত হৈ থাকিব লাগিব নহ'লে কাগজ পত্ৰ কেনেকৈ উলিয়াইছে কি কৰিছে গাফিল আমি খাজানা দি আছোঁ আমাৰ নামত চিতাবাহীত আমাৰ নাম আছে তেনেস্থলত ইয়াত কেনেকৈ এই টাউন অঞ্চলত হয় বুলি বহুত দূৰৰ ভিতৰুৱা গাঁও তেনেকুৱা নহয় তেনেকুৱা অঞ্চলত কেনেকৈ সিহঁতে এইটো কাম কৰিব পাৰে আজি যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ উপজাদিন প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ উপজাদিনত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুৰাগীয়ে উদযাপন কৰিলে জন্মদিন ডিব্ৰুগড়ৰ অনুপ চেতিয়া নামৰ অনুৰাগীজনে পিঠিত আঁকি লৈছে জুবিনৰ টাটু ভাৰ্গৱ কোঁৱৰ নামৰ এজন যুৱকে আঁকিছে জুবিনৰ টাটু আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো সকলোৱে নয়নামণি জুবিন গাৰ্গৰ আজি 50 সংখ্যক জন্মদিন আৰু এই 50 সংখ্যক জন্মদিনৰ দিনাখন বিশেষভাৱে এটা উপহাৰ প্ৰদান কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ এজন যুৱকে আৰু সেই যুৱকজনৰ নাম হৈছে অনুপ চেতিয়া নিজেই আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নিজে জুবিন গাৰ্গৰ এনেদৰে পিঠিত টেটু আঁকি তেওঁক আজি জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ দিনাখন উপহাৰ প্ৰদান কৰিব বা অনুপ চেতিয়া এনেদৰে জুবিন গাৰ্গৰ 50 সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে টেটু অংকন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ যিহেতু সঞ্জয় দেখাইছে কেনেদৰে এই টেটু অংকন কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ যদি চাব যে আপুনি সুন্দৰ এটা টেটু অংকন কৰিছে আৰু জন্মদিনৰ বিশেষকৈ জন্মদিনৰ দিনাখনৰ বাবেই এই টেটু অংকন কৰিছে আৰু সেই যিজন যুৱকে আচলতে এই টেটুটো অংকন কৰিছে অনুপ চেতিয়া নামৰ যিজন যুৱক সেই যুৱকজন মোৰ সৈতে আছে আৰু লগতে সেই যুৱকজনৰ ঘৰ মই ক'ব বিচাৰিম ডিব্ৰুগড়ত আৰু ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ বিমল অটো এজেঞ্চিত তেওঁ কৰ্মৰত তেখেতৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিম অলপ ঘূৰি দিলে মোৰ সুবিধা হ'ব আজি জুবিন গাৰ্গৰ যিহেতু জন্মদিন কেনেদৰে মনলৈ আহিল আচলতে এই টেটুটো বনোৱাৰ বাবে যেতিয়াৰ পৰা তাৰমানে গান কি বস্তু বুজি পাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা জুবিন দাৰ গানেই শুনো খালি আজিলৈকে মই জুবিন দাক ফেচ টু ফেচ লগ পোৱা নাছিলোঁ তো কেতিয়াবা বিহু কমিটি গ'লোঁ কমিটিয়ে মোক খেদাই দিয়ে লগ কৰিব নিদিয়ে তো মনত বহুত এটা তাৰমানে দুখ লাগে তাৰপৰা ইয়াক কওঁ মই যে মই জুবিন দাক লগ কৰিব খোজোঁ ই ক'লে তুমিতো তেনেকৈ লগ কৰিব নোৱাৰিবা কিবা এটা কৰিব লাগিব তুমি জুবিন দাৰ কাৰণে তাৰপৰা ক'লে যেতিয়া টেটু গম পালোঁ মই টেটু আৰ্টিষ্ট হ'লি তাৰপৰা মই ইয়াক ক'লোঁ যে মই টেটু এটা বনাম ই ক'লে কাৰ টেটু মই ক'লোঁ এক জুবিন দা টেটু তাৰপৰা ই ভাবিলে মই সৰুকৈ বনাম খালি মই যে ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট লৈ গৈছোঁ আচলতে ই নাজানে খালি যেতিয়াই ক'লোঁ ই একেটা কথাতে বুলি ক'লে তাৰপৰা সেই মৰ্মে আপোনাৰ মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ল এই যোৱা সপ্তাহে শেষ হৈছে জুবিন গাৰ্গক দেখুওৱা হ'ল নাই টেটুটো আজি যিহেতু গুৱাহাটীলৈ অহা হৈছে জুবিন দাক লগ কৰিবলৈ অহা হৈছে জুবিন গাৰ্গক দেখুওৱা হ'ল নাই টেটুটো যোৱাকালি এখন শ্ব'ত দেখুওৱা হ'ল চ' আকৌ পাৰ্চনেলি তেখেতে মাতি পঠিয়াইছে চাওক কিমানটো কি কৈছে জুবিন দা কি কৈছে জুবিন দাই ভাল পাইছে চুই চাইছে তাৰপৰা জুবিন দাক মই এতিয়া মোৰ তাৰমানে ষ্ট্ৰেংথ নিচিনাই এতিয়া আৰু চবেই কয় মোৰ পিছত আমুক আছে তামুক আছে মই ক'বলৈ ভাল হয় মোৰ পিছফালে মোৰ বেকত সদায় জুবিন দা আছে বুলি সেইটোৱে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আচলতে যিজনে ইয়াৰ এই টেটুটো মূল অংকন কৰিছে বা যোনজনে এই টেটুটো আঁকিছে সেইজন ব্যক্তি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু তেওঁৰ সৈতে জানিব বিচাৰিম যথেষ্ট সময় প্ৰয়োজন হৈছিল কেনেদৰে অঁকা হৈছিল বা কেনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল তো প্ৰথমে যেতিয়া আহিলে যে ক'লে কি পৰ্ট্ৰেট এটা বনাম ভাবিছোঁ মই প্ৰথমতে গম পাইছোঁ বাৰু জুবিন দাৰ পৰ্ট্ৰেটে হ'ব মই সৰুকৈ বনাব বুলি ভাবিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ক'লে মোৰ গোটেই বেগত মই বনাম আৰু মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ইমান ডাঙৰ টেটু বনাইছোঁ মই কেতিয়াও এতিয়ালৈকে বনাই পোৱা নাই মানে
তো প্ৰথমতে ভয় খাইছিলোঁ কাৰণ যিহেতু জুবিনদাৰ টেটু হয় আৰু ইয়াত ভুল কৰিব নোৱাৰোঁ মই তো বহুত সময় লৈছোঁ ভাবি মেলি এওঁক মই একে উশাহে বুলি ক'লোঁ যে মোক বিশ্বাস ৰাখা তেওঁ বিশ্বাসটো ৰখাৰ কাৰণে ভালো লাগিলে আৰু যিহেতু জুবিনদাও ভাল পাইছে মোৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিলে মানে জুবিনদাই টেটুটো ভাল পাওক তো জুবিনদাই যিহেতু ভাল পালে মোৰ ভাল লাগিলে আৰু এখেতে বহুত বিষ সহ্য কৰিছে সেইটো মই ক'বলগীয়া কথা মানে তেওঁ মানে বহুত দিন মানে ৰাতি শুব নোৱাৰে বিষত মোক ফোন কৰে এনেকৈ মুঠতে তেওঁ মানে বহুত সহ্য কৰি মেলি বস্তুটো বনোৱা হ'ল আৰু মানে তাৰপিছত মোৰ এটা বস্তুৱে ভাল লাগিলে জুবিনদাই কালি মানে এপ্ৰিচিয়েট যেতিয়া কৈছে মানে মোৰ সেইটো লাইফ টাইম তোমাকো মানে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে বহুত এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে মানে কি কৈছে জুবিনদাই কৈছে নৰ্মেল টেটু এটা বনোৱাৰ মাজত আৰু এটা পৰ্ট্ৰেট টেটু কাৰোবাৰ মানে চেহেৰা এটা বনোৱা তাকো ইমান ডাঙৰ আৰু এইটো স্কিনত বনোৱা হয় ন আপুনি ইয়াত মোহাৰিব নোৱাৰে ওৱান টাইম মানে এবাৰ যেতিয়া স্কিনত সোমালে ডেট মিনছ আপুনি সেইটো নেক্সট আঁতৰাবলৈ বহুত কষ্ট হৈ যায় চ' এইটো হিউমেন কেনভাছটো মানে ৱৰ্ল্ডৰ চবতকৈ টাফেষ্ট কেনভাছ বুলি কোৱা যায় মানে চ' এইটো এটা বহুত কঠিন কাম এটা আছিলে যোনটো মই মানে সফল যে হৈছে মানে সেই বস্তুটো ভাবিয়ে মানে ফল পাই ভাল লাগিছে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে জুবিনদাৰ যিহেতু জন্মদিন সকলোৱে নয়নৰ মণি বা বুকুৰ আমঠু সকলোৱে হাৰ্ট থপ জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন আৰু জন্মদিনৰ দিনাখন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজ মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান মীন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক হৰেণ কুমাৰ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ উৎকোচ লোৱা অৱস্থাত হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰ্মচাৰীজন জলাশয় আবণ্টনৰ বাবে ৩৫০০ টকা উৎকোচ লৈছিল নাথে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পাৰ্চনেল ব্ৰাঞ্চত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক পৱন জ্যোতি ডেকাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি দুৰ্নীতি নিবাৰণ সেই দুৰ্নীতি নিবাৰণত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সেইখিনি সময়তে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু সংখ্যক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আচলতে ঘোচ লোৱা এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেনেদৰে এটা ঘটনা ঘটিছে মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পাৰ্চনেল চেলত আৰু যিজন লোক তেখেতে আচলতে ৩৫০০ টকা ঘোচ হিচাপে লৈছিল তেখেত হৈছে কৰ্মচাৰী পাৰ্চনেল চেলৰ হৰেণ কুমাৰ নাথ আৰু আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেদৰে এতিয়া যি পাৰ্চনেল চেল এই পাৰ্চনেল চেলত আচলতে আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই আছে আৰু এনেদৰে যিসমূহ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু যি ঘোচ ইতিমধ্যে ল'লে সেই লোৱা লোকজনকো জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যিখিনি সময়ত আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি এই যি দুৰ্নীতি নিবাৰণ এই দুৰ্নীতি নিবাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সেইখিনি সময়তে এনেদৰে কৰ্মচাৰী যি আটক হোৱাটো এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় আৰু আমি যিজন লোক আচলতে লোকজনৰ পৰা কিয় টকা লৈছিল বা কিয় ল'বলগীয়া হ'ল সেইসমূহ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এজন আছে আচলতে লোক কওকচোন গৰঙা সেইখন টেণ্ডাৰ হৈছিলে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে ইভিনিং হেডলাইন্সৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ ধন্যবাদ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট सूर्या सीमेंट सूर्या सीमेंट अटूट घर अटूट अखम आप देख रहे हैं डीडी न्यूज आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी है जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिडनी संवाद में मुख्य भाषण भारत में प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति थीम पर रखेंगे अपने विचार। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी सिडनी संवाद को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री आज औषधि क्षेत्र के पहले विश्व नवाचार सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन का उद्देश्य देश में औषधि उद्योग में उन्नत नवाचार परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकताओं और रणनीति पर चर्चा करना। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से होगा शुरू। 23 दिसंबर तक चलने वाले आगामी सत्र के दौरान अहम विधायी कामकाज सरकार की तरफ से प्रस्तावित।
संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन में भारत ने अफगानिस्तान के विकास में सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पक्षपात हितों से ऊपर उठकर हर संभव मदद सुनिश्चित करने का किया आह्वान। जयपुर में खेले गए पहले T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से दी मात। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बनाई बढ़त। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 9 बजे सिडनी संवाद में मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री भारत में प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति थीम पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। उनके संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आरंभिक भाषण देंगे। सिडनी संवाद 17 से 19 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है। सिडनी संवाद दरअसल राजनेताओं, उद्योग हस्तियों और सरकारी प्रमुखों को व्यापक चर्चाएं करने, नए विचार सृजित करने और उभरती एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न अवसरों एवं चुनौतियों को सामान्य समझ विकसित करने की दिशा में काम करने के लिए एक मंच पर लाएगा। सिडनी संवाद में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी मुख्य भाषण देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये एक विशिष्ट पहल है जिसका उद्देश्य भारत के फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नवाचार के उत्कृष्ट परिवेश या माहौल को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और रणनीति बनाने के लिए सरकार एवं उद्योग जगत के प्रमुख भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों, शिक्षाविदों, निवेशकों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाना है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय फार्मा या दवा उद्योग में उपलब्ध अवसरों पर भी प्रकाश डाला जाएगा, जिनमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान 12 सत्र होंगे और 40 से भी अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वक्ता नियामकीय माहौल, नवाचार का वित्त पोषण या धनराशि की व्यवस्था करने, उद्योग अकादमिक सहयोग और नवाचार संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं सहित कई विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में देश विदेश के फार्मा या दवा उद्योगों के प्रमुख सदस्यगण, अधिकारीगण, निवेशक और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, IIM अहमदाबाद एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के शोधकर्ता भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। और संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। यह सत्र 23 दिसंबर को संपन्न होगा। आगामी सत्र के दौरान अहम विधायी कामकाज सरकार की तरफ से प्रस्तावित हैं। और देश के जनजातीय लोगों के सम्मान और विकास के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार ने 2 और बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत देश के 5 राज्यों के 44 उन आकांक्षी जिलों में मोबाइल टावर और रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां जनजातीय लोगों को काफी वहां उनकी संख्या है। वहीं कैबिनेट बैठक में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों में करीब 6,500 करोड़ रुपए खर्च करके 4G सुविधा वाले मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, जिसका फायदा उन जनजातीय लोगों को मिलेगा जो दशकों से इस प्रकार की सुविधा से अभी तक वंचित रहे हैं। मोदी सरकार के इस फैसले से देश के 7,287 गांवों में मोबाइल टावर की सुविधा मिलेगी, जिसके चलते इन ग्रामीण इलाकों तक ई-गवर्नेंस का फायदा भी पहुंचेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY1, PMGSY2 और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को जारी रखने को भी मंजूरी दी है, जहां देश के जनजातीय इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो वहीं इन जनजातीय जिलों में सड़कों के जाल को बिछाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत उन इलाकों में नई सड़कें बनाई जाएंगी जो बीते 2 फेज में छूट गई थीं। इसके लिए मोदी सरकार ने 33,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें केंद्र सरकार 22,978 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सड़कों को बनाया जाएगा, तो साथ ही इस काम में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जिसके तहत कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाई जाएगी। इस फैसले के तहत वामपंथ उग्रवाद प्रभावित 9 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिन 1.84 लाख बस्तियों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य था, उनमें से सिर्फ 2432 बस्तियां अभी सड़कों से नहीं जुड़ी हैं। बाकी बस्तियों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। तो वहीं इस योजना के तहत 6.45 लाख किलोमीटर सड़कों को बनाने का जो लक्ष्य था, उसमें से सिर्फ 20,950 किलोमीटर सड़कों का बनना बाकी रह गया है। वहीं बाकी सड़कों को बनाया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2024 से 2025 तक 1.12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। मोदी सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के जनजातीय जिलों को होगा और इन इलाकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खासा फायदा होगा और विकास की नई रफ्तार मिलेगी। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश ने नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। टीकाकरण अभियान में अब तक 114 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीकाकरण अभियान के 306वें दिन शाम 7 बजे तक 65 लाख से अधिक टीके लगाए गए। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन में भारत ने अफगानिस्तान के विकास में सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने चर्चा के दौरान कहा कि अफगानिस्तान में बहुत रक्तपात और हिंसा देखी गई है। टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत तत्काल मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है, जो बिना किसी बाधा के सीधी पहुंच सके और जाति, धर्म या राजनीति से परे हो। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। वहीं यूएनएससी प्रस्ताव 2593 तालिबान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वो आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल न होने देगा। और वहीं एनएसए के तीसरे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान जरूरती सहमति को दर्शाता है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टी20 मैचों की घरेलू सीरीज की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। बुधवार को जयपुर में खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड से जीत के लिए मिले 165 रनों के लक्ष्य को भारत ने 2 गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करके जीत में अहम योगदान दिया। सूर्य कुमार यादव के 62 रन और कप्तान रोहित शर्मा के 48 रनों की उन्होंने पारी खेली। वहीं ऋषभ पंत ने 17 गेंदों पर नाबाद 17 रनों की अहम पारी खेली। इससे पहले न्यूजीलैंड ने मार्टिन गप्टिल के 70 और मार्क चैपमैन के 63 रनों की पारी की बदौलत 6 विकेट पर 164 रन का स्कोर बनाया। इस जीत के साथ ही भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में न्यूजीलैंड से मिली हार का बदला भी ले लिया। भारत ने अब तक 3 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।